So today we are going to discuss about the factorization of trinomial of the form of ax square plus bx plus c. So how to do the factorization of this form ax square plus bx plus c. तो ax square plus bx plus c में यदि कोई फॉर्म दिखेगा तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो मैंने प्रीवियस दो वीडियोस में देखा कि हाउ टू फैक्टराइज बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर आउट and the grouping method. Now this is another method where we can find out the factorization of this form ax square plus bx plus c. तो अब इसमें ax square plus bx plus c के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, जैसे ऐसा लिखा मान लो x square plus 2x plus 1 इस फॉर्म में है। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर x स्क्वायर का वैल्यू 1, यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 दैट इज a इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 1। कैसे पता किया? जो x के साथ है, so whatever with x is there that is b here, so here b is equals to 2 and c is equals to 1, so this we got. Now let's say इसमें भी ऐसा हो सकता है x square plus 5x plus 6, this type of form can become. Now it may be also this also 2 plus 3x plus x square, and सर ऐसा तो नहीं है, yes, लेकिन उसको अरेंज कर सकते हैं। I can arrange in this way x square plus 3x plus 2, or it may be like x may be here plus 1 here and x is 2. So these all forms, how to factorize these all forms by using the method which we are going to discuss now. तो इसे कहते हैं middle term split method. So middle term split method is very important and it will be asked in the exams also. So middle term split method we are discussing. So middle term split. So middle term split method. तो जब भी ax square plus bx plus c के फॉर्म के पॉलिनोमियल आएंगे तो हमें उनको कैसे फैक्टराइज करना है, ये मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या करने का, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो मेरे पास है x स्क्वायर plus 5x plus 6 and we need to factorize it. X square plus 5x plus 6 we need to factorize this. X square plus 5x plus 6 we need to factorize this by middle term split method. So first you check what is the middle term. Middle term is in this form. In this form you have to see ax square plus bx plus c. तो जो भी पहले पॉलिनोमियल दिया है, whichever polynomial is given, first you write in this form ax square plus bx plus c. Sometimes polynomial will be given in this form or sometimes will not be given. So first you have to make it. So how to make this form? We have to write ax square plus bx plus c. So first we have to write the x square term, then x and then constant. So here I have written x square plus 5x plus 6. So पहले इस फॉर्म में लिखो x square plus bx plus c के फॉर्म में. Next step is what? Take the coefficient of x, middle term. Middle term is what? 5x, and we have to take middle term means 5. 5x होगा middle term, लेकिन हम 5 को ही consider करेंगे. So I will take 5. And this is first step. The second step you have to multiply the a and c. You have to multiply coefficient of x square which is 1 here and then constant term. पहले क्या करना है, मिडिल टर्म में उसका कोफिशिएंट लेना है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट मैंने 5 ले लिया। सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, तो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म व्हिच इज 6, आई गॉट 6। द सेकंड स्टेप इज, तो सेकंड स्टेप तक हो गया ना। इसके बाद आगे कैसे प्रोसीजर कर रहा है, सी नाउ स्प्लिट द 5 इन सच अ वे दैट after addition of, split the 5 in two terms, 5 को दो टर्म्स में डिवाइड करो कि उनका एडिशन करने पर 5 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 6 है। क्या? We have to split this 5 in such a way that by adding these two parts I will get 5 and by multiplying them I will get 6. So how to split this 5 in such a way? Okay, so now you will think how कैसे करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं 6 को लो उसके फैक्टराइजेशन करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. If we take 2 and 3, if we add them 2 and 3 I will get 5, and if we multiply 2 and 3 I will get 6. So we have to do in this way. We have to split the 5. We have to split the 5 in such a way that after addition of these two parts I should get the middle term, and after multiplying them I should get the multiplication of constant and the coefficient of x square.
point is clear. So now I have split 5 in, and now I will take this x square plus 5x plus 6. मैंने x square plus 5x plus 6 को ले लिया. Now next part is I will take x square plus 5 will be separated 2 plus 3 into x plus 5. तो 5 को कैसे लिखना है, जो यहाँ पर प्रोसीजर किया उसको वैसे लिखना. तो I wrote the 5 in this form 2 and 3. 2 plus 3 is 5 and 2 multiplied by 3 is 6. Okay. Now after this I will open the bracket. So x square plus 2x plus 3x plus 6. So I got here 4 terms. Then I will do the factorization by grouping method. So grouping method में क्या करते थे? We'll take these two as a one group and these two as a another group. Now from this group x square plus 2x, what can I take common? Common मतलब क्या लेना है? इसको taking out the common factor मेथड से भी कर सकते हैं. x square plus 2x में से क्या कॉमन निकालेंगे? जो दोनों में है. दोनों में क्या है? x. HCF लेंगे x बाहर. Now after x square को फिर x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x? 2x को x से डिवाइड करेंगे. अब 3x plus 6. तो 3x plus 6 में क्या कॉमन है दोनों में? What is the HCF of 3x and 6? It is 3. तो 3 कॉमन लेंगे और फिर 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. So I got x into x plus 2. Now from this whole expression, what can I take common? I can take common which is x plus 2. If we take x plus 2 common, तो क्या बचेगा यहाँ पर? फर्स्ट टर्म x बचेगा, सेकंड टर्म 3. So this x plus 2 into x plus 3. So this is a factorization of x square plus 5x plus 6. The two factors of x square plus 5x plus 6 is x plus 2 into x plus 3. Getting this? So pause the video to note it down. Okay. The next part which we will discuss, we'll take some more question than you will get. Now I will take another question which is the same type. It is x square minus 5x plus 6. X square minus 5x plus. अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड. तो in order to do the factorization by splitting middle term method, I will take the middle term which is minus 5 and then I will multiply the coefficient of x square which is 1 and 6. I will get. पहले ये कर लो हमेशा. पहले मिडिल टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ x को लिखो -5, देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो. So if we take the coefficient of x square, it is 1, the constant term which is 6. Then I will take these two terms and now split the -5 in such a way that in two parts, in such a way that if we add these two parts, I will get -5, and if we multiply these two parts, I will get 6. So how to split? If we take -2 and -3, will I get -5? Let's check. If we take -2 plus -3, I will get -5. Yes, -5 we are getting. And if we take -2 multiply with -3, I will get +6. Okay. So this is satisfying the condition. कोई लोग कह सकते हैं 2 और मतलब ये भी तो ले सकते हैं -6 + 1 तभी -5 आएगा. लेकिन हाँ -5 तो आ जाएगा, लेकिन -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा. मैं क्या किए प्लस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके. सो नाउ आई विल टेक -2 and -3. So x square minus 5x plus 6. मिडिल टर्म को क्या लिखेंगे? -5 को लिखेंगे -2 -3 into x. ये टर्म इंपॉर्टेंट. The next part is अब स्क्वायर क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करना है. So it will be x square minus 2x minus 3x plus 6. Now same thing. We have to take common. So common from the first two terms. So common from the first two terms we can take. What we can take common? I can take x common. If we take x common, I will get x minus 2. From minus 3x plus 6, what we can take common? So minus 3x plus 6, I can take minus 3 common. If we take minus 3 common, it will be x minus 2. So how to check whether we are progressing fine correctly or not? You can just see there. If you are getting same thing, then you are going right. If you are getting different, then we have to check it again. So I can take x minus 2 common, then I will get x minus 3. So x square minus 5x plus 6 has two factors which are x minus 2 and x minus 3. You can note it down.
The next question is a square plus 10a plus 24. We need to factorize it. So first we check whether it is in this form or not. So it is ax square plus bx plus c. Yes, it is in this form. But यहाँ तो सर x है, यहाँ पर a है. वो तो variable है. So variable may be anything. It may be sometimes like this also, y square plus 10, y plus 24. So no need to worry about it. So variable can be anything. But here variable is a, here variable was x square. So this is ax square plus bx plus c form. So I can use my method, which is splitting the middle term. So middle term क्या है यहाँ पर 10. So I will take 10 here. So we have to split 10 in such a way that after in two parts, that after addition I will get 10 and after multiplication क्या आना चाहिए? तो हम लेंगे coefficient of x square means coefficient of a square. It is 1 and constant हम 24. तो 1 और 24 को multiply करने पर कितना आएगा? So we have to split this 10 in such a way that after addition I will get 10 and after multiplication I will get 24. तो कैसे करेंगे? यदि मैं 6 और 4 ले लूं तो 6 and 4, the addition of 6 and 4 is 10 and 6 multiplied by 4 is 24. Yes, we are satisfying the condition. Now sir, आपने तो कर दिया, लेकिन हम कैसे करेंगे? You can do this way, right? We have to take 24 and factorize it. 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3. Now you have to make the pairs. So if we take these two and these two, so I will get 2 2 the 4 here and 2 3 the 6, 6 and 4 मिल गया. और कोई पेयर लोगे, जैसे मैंने ले लिया 8 and 3. मान लो सर यदि मैं ये ले लूं तो यदि इन तीनों को ले लूं और इसको अलग ले लूं तो 2 multiply by 2 multiply by 2 तो 8 आएगा और ये 3 आएगा. तो 8 3 the 24 तो होगा, लेकिन 8 plus 3 11 होगा. हमें 10 चाहिए, तो I cannot take it. तो समझ में आ रहा है कैसे करना होता है? So this is the way we have to. Now a square plus 10a can be written as 6 plus 4 into a plus 24. So this is easy method, right? Now it's splitting. Now we break the bracket. A square plus 6a plus 4a plus 24. I can take common a. If we take a common from the first two terms, I will get, जैसे a common लिया तो a square को a से divide करेंगे तो a आएगा और 6a को a से divide करेंगे तो 6 आएगा. Now 4a and 24. So 4a and 24 से what we can take common? We have to take HCF of 4a and 24. So HCF is 4. If we take 4 common, तो 4 common लेंगे और 4a को 4 से divide करेंगे तो a आएगा और 24 को 4 से divide करेंगे 6 आएगा. तो मैंने बताया था पहले भी कैसे हम चेक करना, वी आर गेटिंग राइट और रॉन्ग, वी हैव टू चेक इट. इफ द बोथ टर्म्स a plus 6 are there, then we can say it is correct. So now a plus 6 I will take common, then I will get a plus 4. So a plus 6 and a plus 4 is a factor of a square plus 10a plus 24. So this is the next question is 6a square minus a minus 15. We need to factorize it. Now first again we have to check whether this is in this form or not. It is ax square plus bx plus c form. Yes, we can use the middle term split method. So first thing is we have to take the middle term. So middle term means coefficient of x. तो यहाँ पर coefficient of x लेते थे, यहाँ पर coefficient of a लेंगे which is -1. We have to split the -1 in such a way that after addition of these two terms we should get -1 and after multiplication we should get the coefficient of x square which is 6, coefficient of a square which is 6 and the constant term which is -15. So 6 multiplied by -15 it is -90. So we have to split the -1 in two parts in such a way that addition करने पर -1 आना चाहिए और multiply करने पर -90 आना चाहिए. So if we think only, I will get, I think, -10 and 9. If we add -10 plus 9, I will get -1. And if we multiply -10 with 9, I will get -9. So this -10 plus 9 is -1, -10. So I can do this easy. So now I will take 6a square minus, okay, -1 can be written in this form of -10 plus 9 into a -15. तो बस मिडिल टर्म को चेंज करना है, उसको चेंज करना और बाकी x 6x स्क्वायर -15 एज इट इज.
Okay, the next part, I will split the brackets. It is 6a square minus 10a plus 9a minus 50. So we take what we can take common from this. A तो ले ही सकते हैं. A के अलावा what is the SCF? I can see I can take 2a common. So it is 3a. If we divide 6a square upon 2a, I will get 3a minus 5. What we can take common from 9a minus 15, it is 3. Plus 3 I can take common, तो 3a minus 15. कैसे आया? जैसे मैंने SCF लिया 9a और minus 15 का, तो I am getting 3. And then I will divide 9a by 3, I will get 3a. And I will divide minus 15 by 3, I will get minus 5. So I can see 3a minus 5 is correct. So 3a minus 5, and this is 2a plus 3. So this is also, you can note it down. Okay, the next question is 3a square minus 1 minus 2a. We need to find out the factorization factors of this. We need to do the factorization of this. So first we have to check whether this is the standard form ax square plus bx plus c. ये standard form में है कि नहीं ax square plus bx plus c में. So I can see where 3a square is there, constant term is in between. तो constant term हमेशा last में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहाँ आ गया? वो middle में आ गया. और जो कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वाला टर्म्स मिडिल में आना चाहिए, वो लास्ट में चला गया. तो आई विल मेक इट प्रॉपर्ली. देन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 3a स्क्वायर minus 2a in middle and minus 1 in the last. फर्स्ट विद दिस वे. कैसे किया? क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी फैक्टराइजेशन करना है पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा. तो आई मेड इट. नाउ मिडिल टर्म -2, split the middle term -2 in such a way that addition should be -2 and multiply करने पर कितना आना चाहिए? 3 मल्टीप्लाई -1. तो -2 को कैसे स्प्लिट करें कि एडिशन करने पर -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -3 आ जाए? तो मैं देख रहा हूं कि यदि इसको -3 प्लस 1 ले लो तो हो जाएगा, क्योंकि -3 प्लस 1 होता है -2 and if we multiply -3 plus 1 I will get -. So this is the form. So I will write 3a square -2 can be written as -3 plus 1 into a minus 1. Open the brackets. 3a square minus 3a plus a minus 1. So what we can take common? 3a square minus 3a में से HCF is 3a. Okay. And 3a square divided by 3, it is a minus 1 plus 1. If nothing is common, so plus 1 we can take common. A minus 1. So a minus 1 here, a minus 1 here. I will take a minus 1 whole common, then it is 3a plus 1. So this is a factorization of 3a square minus 2a minus 1. Okay.